And so we are live now. We can go ahead. Hello, namaskar, and welcome everyone to another edition of webinar in the series Illness to Wellness. As you all know, we've been carrying on these programs since past 2 years, uh, virtually, even though before that we've been doing uh, camps, interactive sessions, and we've been going out in colonies and societies, and we've done a lot of camps in the series of illness to wellness, and creating awareness about chronic diseases, about lifestyle diseases, about diabetes, about heart disease, and now we are continuing this in the virtual world. And we've already done lots of programs on different topics related to lifestyle disease, literally all the health issues that we are facing today. And these programs uh, have been very important in providing the right information to everyone who's there, to our audience, to the esteemed members of the audience, especially during the period of COVID, when we could not move out, when we could not go out, and still we needed the right information. Because right information is very important. And in these programs, we bring to you specialists, panelists from all over India who are renowned for their work, not only in our country, but all over the world. So we are lucky enough to be a part of this program. And today's topic is very special. It is dedicated to the World Heart Day. We're going to have Dil Ki Baat and Dil Se Dil Ki Baat with experts in the field of cardiology. So to carry on further and to welcome them, I would request Sri Anil Rajputji, who's been the mainstay of this program and who has started these program, conceptualized, and with whose help we've been carrying on since past so many years. So thank you, sir, and welcome on board the program. So unmute yourself, please. Hello. Yes, sir, we can hear you now. Thank you very much, Dr. Kesri. It is my proud privilege to welcome Dr. Rajiv Pasi, MBBS, DNB, DM, cardiologist, fellow of Indian College of Physicians, Gangaram Hospital. We are awaiting to be joined by Dr. Praveen Chandra and Dr. Sushant Srivastava, and Dr. Kesri, who has been my partner for all these years. Good afternoon, and I welcome to all to the webinar on Dil Ki Baat, organized during the week of World Heart Day 2022 by ASSOCHAM under its Illness to Wellness campaign. At the outset, I must thank all the doctors and health and wellness professionals who have extended their enthusiastic and unstinted support to this campaign, which generates awareness on the crucial subject of health and promotes healthy living through holistic measures. Today's webinar is on protecting one's most important organ of the human body, the heart. The primary organ of circulatory system is a finely tuned machine functioning non-stop from the day one till the last day. We live only as long as our heart beats, and therefore any sign of trouble to this organ should be taken very seriously, as it linked to one's longevity and survival. In 1999, the World Heart Foundation, in conjunction with WHO, announced the establishment of World Heart Day on 29 September. This day informs people around the globe that cardiovascular diseases is a leading cause of death, claiming 18.6 million lives each year, and highlights the actions that individuals can take to prevent and control heart-related ailments.
Through this campaign, the World Heart Foundation unites people from all countries and backgrounds in the fight against the CVD burden and drives international action to encourage heart healthy living across the world. Cardiovascular disease is also a leading cause of mortality in India. According to the Indian Heart Association, nearly 60% of the global heart disease burden lies in India. The global burden of disease studies estimates that CVD death rate of 272 per 100,000 people in India is higher than the global average of 235. Additionally, the Indian Heart Association points out that the Indian tend to suffer from heart ailments at an early age than other demographics. Country to the earlier belief that heart-related issues impact only the elderly population, cardiac arrests are becoming common amongst Indian less than 60 years of age. The recent shocking deaths of singer KK, actor Siddharth Shukla, Puneet Rajkumar, and ace comedian Raju Srivastava has brought the focus on the alarming rise in the instances of fatal condition among Indian under 60 years of age. I've just taken these names because they are popular. Many young people who are under the 60 are dying and they are going unnoticed. So the purpose is to just draw the attention of the people. There are several threats to your heart that prevents from staying healthy. The most important behavioral risk factors of heart disease are unhealthy diet, physical inactivity, and improper lifestyle. The effects may show up in individuals as raised blood pressure, raised blood glucose, raised blood lipid, overweight, and obesity. These factors indicate an increased risk of heart attack, stroke, heart failure, and other complications. Moreover, as work pressure, stress, and less sleep are becoming common in adults, heart diseases have become more of lifestyle disease in recent times. Given that cardiovascular disease strikes Indian about a decade earlier than most people worldwide, the importance of building and enduring cardiovascular health cannot be overstated. Therefore, incorporating heart healthy habits into your lifestyle are essential to enjoy a healthier life for years to come. It takes only a few changes in your daily schedule and practices to ensure that your heart stays healthy. Practices such as regular physical activity, achieving ideal body weight, consuming foods high in whole grain, protein, fruits and vegetables, and low in fat, evaluating cholesterol levels, controlling hypertension and diabetes, and taking remedial measures through lifestyle changes, medication, and regular checkups are key for maintaining sound heart health. One should be aware that family history, if any, and take necessary precautionary measure after consulting with the doctors. I strongly believe that there is no shortcut to a healthy heart. By incorporating heart healthy habits into a lifestyle, you may well enjoy healthier life for years to come. We have with us today eminent doctors from this field who will share their expert views on the need of a comprehensive approach for understanding, managing, and timely prevention of heart disease. I welcome them once again and look forward to an enriching session. I wish this webinar the very best. Thank you and Jai Hind. Over to you, Dr. Kesri. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such an elaborate introduction into today's topic. And this topic is extremely important because heart is perhaps the most vital organ in our body. So I'm not going to take much time on any other topics, and I would very quickly come over
to Dr. Rajiv Passi sir. We understand that majority of deaths in our country are predominantly because of cardiovascular diseases. So which is the most common disease of concern of heart, which we all should be worried about and which we actually are worried about? So please unmute yourself, sir. Thank you, Mr. Dr. Kesri and Dr. and Mr. Rajput. Mr. Rajput, in his summary, has essentially brought out what is the essence of the problem which is facing our society, especially in India today. Cardiovascular disease is a wide spectrum of disease, but the disease affecting the heart, disease affecting the brain, and disease affecting the peripheral arteries. This is what comes under atherosclerotic cardiovascular disease. And atherosclerotic cardiovascular disease is the entity which as per your question, is the primary reason for early mortality in majority of the cases, and especially in the cases Mr. Rajput had mentioned, the VIPs who met sudden early premature death. So atherosclerotic coronary artery disease, atherosclerotic cerebrovascular disease is now acknowledged to be very highly prevalent in Indian society. The various risk factors are a predominance of diabetes, hypertension, smoking, lifestyle, and stress. So these factors are the factors which are combining to produce events which result in either a myocardial infarction or a stroke, and ultimately leading to casualties. So basically, atherosclerotic cardiovascular disease is a mixture of genetic and phenotypic disease. Genetic is people are prone to high cholesterol levels. They are prone to cardiovascular events genetically if they have a strong family history. Familial hypercholesterolemia is an example in which we find that people at a young age have high levels of bad cholesterol, which leads to events in the heart, in the brain, and in the peripheral arteries. The other factor, besides the genetic factor, is the environment factor, and the environment factor is dependent on smoking, alcohol, physical inactivity, stress, and generally a bad lifestyle. So all these factors, when they combine, this can lead to a catastrophic event, which has happened in so many cases. Another point which I would like to make at this point is the importance of moderation in whatever is being done. Some of these people whom Mr. Rajput mentioned were doing extreme exercises, like running on the treadmill, running on or lifting weights, exercising beyond what is acceptable for their age. And ultimately, these people ended up with problems. So moderation in exercise, moderation in whatever activities is being done is important. So we have to realize that it is an epidemic. Just like, see, we have to realize COVID killed some people in India. We have some statistics. A lot of people question that, but there are some statistics. Cardiovascular diseases is killing far more people than COVID has killed anywhere in this world. So cardiovascular diseases remains by far the number one cause of both mortality and morbidity in our country, and needs to be addressed in a earnest manner, both in the private and in the government sector, so that we are able to bring down the incidence of such events, plus
we are able to bring down the incident, the loss of man hours, which results in because of these events. Thank you, sir. So, as you've mentioned that ASCVD is probably the predominant killer these days. So, what could be the symptoms? How can our viewers recognize or understand that they might be having this problem? They're heading towards it. उनको कैसे समझ में आए? What could be the This is a symptoms? very good question, sir. See, the general population, if there is a strong family history, the person should be aware. And whenever we find patients with young myocardial infarction, whenever we do angioplasty or bypass on these patients, we find and we try to evaluate their first degree, second degree relatives, and very often a lot of relatives do have this problem. It is important to educate these people to be able to pick up symptoms like if they start feeling breathless on climbing stairs, which is disproportionate to their age and their health status. If they start having chest pain on exertion, if they start feeling dizzy on exertion. So if exertional symptoms are there, it is suggestive of atherosclerotic coronary artery disease. If the patient has weakness of some limb, transient weakness, or excessive headache or pain in the limbs, these are also suggestive of atherosclerotic disease in various parts of the body. Plus, it, as I have mentioned, and as is now well acknowledged, people with history of smoking, blood pressure, consuming alcohol, all these are people who are prone to have atherosclerotic disease. So they have to be made aware and made cautious that if they persist with these habits, they will end up with some problem at some stage or the other. Sir, have there any changes taken place? Has this disease started becoming more frequent in the younger generation? क्योंकि जैसे अभी श्री राजपूत जी ने बताया, आपने भी बताया. आपने सही बोला, ये बिल्कुल आपने सही बोला. यंगर जनरेशन में द डिजीज इज बिकमिंग, सी द incidence, now it is acknowledged all over the world that the incidence of atherosclerotic disease in India is at least 10 years before it is there in the Western world. At least 10 years, maybe even earlier. The reason is that we are the diabetic capital of the world. We have a diet which is full of things which we should not be eating. Plus, the younger generation is living on so many dietary supplements, on alcohol, and there is lack of physical exercise. Their timings are bad. They sit in front of the computer the whole day and work like this. So these are the things which we have to realize are all predisposing to increased cardiovascular events. So younger generation is definitely getting affected now and needs more awareness, they should be made more aware, and the prospective or the risk factors should be communicated with them, and they should be made to realize that if they persist with such lifestyles, they are exposing themselves to future events. थैंक यू सर. सर, दो शब्दों में और बताइए एंजाइना के बारे में और साइलेंट एंजाइना के बारे में. What are the symptoms? What are angina basically means pain in the chest. Pain in the chest, स्पेशली हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि अगर वो ज्यादा चलने से पेन हो रहा है या कम चलने से पेन हो रहा है या बैठे बैठे पेन हो रहा है. अगर जो पेन एक्सर्शन से रिलेटेड है उसको हम क्लासिकली एंजाइना कहते हैं. कई बारी डायबिटिक पेशेंट्स में या पेशेंट्स जिनको दूसरी बीमारियां भी होती हैं उनमें क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता. जब वो चलते हैं उनको सांस फूलता है, उनको जॉ में
दर्द होता है, उनको पीठ में दर्द होता है, उनको वीकनेस लगती है, जितना वो 1 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले या 6 महीने पहले चल पा रहे थे, जो 2 किलोमीटर चल रहा था अब वो 1 किलोमीटर चल पा रहा है, या वो 500 मीटर तक ही चल पा रहा है, उसके बाद वो थका हुआ महसूस करता है। इन चीजों को हम एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं, या साइलेंट एंजाइना जैसा आप कह रहे हैं, जिनमें की एंजाइना वाली प्रोसेस ही है, हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज का ही असर है, पर उनको क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं हो रहा। तो ये भी उतना ही डेंजरस, शायद मोर डेंजरस है, क्योंकि क्लासिकल चेस्ट पेन जिस पेशेंट को होता है वो हमारे पास आ जाता है, हम उसकी एंजियोग्राफी करके उसका एंजियोप्लास्टी या जो भी है उसकी ट्रीटमेंट कर पाते हैं। कई सारे पेशेंट्स जो कि जिनको क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो सोचते रहते हैं हमें गैस है, हमें सांस की प्रॉब्लम है, हमारा मतलब बहुत सारे और फैक्टर्स को वो सोच के उनको ये चीजें पब्लिक नहीं आ पा। सो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, साइलेंट एंजाइना या साइलेंट चेस्ट पेन या साइलेंट इस्चीमिया जिसको हम कहते हैं, वो भी एंजाइना जितना ही डेंजरस होता है, शायद उससे भी ज्यादा डेंजरस। थैंक यू सर, दैट वाज रियली वेरी इलैबोरेट, और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे ऑडियंस और श्रोता वो समझ पाएंगे। एंड अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हैज जॉइंड अस, सो अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, and cordial, especially cordial today because the cordial word comes from cor, that is the heart. So a heartful welcome to you. Thank you. Thank you. Sir, we've talked about atherosclerotic cardiovascular disease. We've talked about angina symptoms. So obviously now we are coming towards the worst that can happen. That is probably myocardial infarction या heart attack. हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है कि सब लोग उसके बारे में जानते हैं, डरते हैं कि हार्ट अटैक ना हो जाए, बहुत भयंकर चीज है। सो ब्रीफली, व्हाट इज अ हार्ट अटैक? एंड in continuation to that, people now know that there is something called angioplasty and bypass. ये क्या होता है और इसमें क्या होता है, so that our common audience can understand. Okay. So सबसे पहली बात ये कि थैंक यू वेरी मच राजेश जी। और अभी जो आपने सवाल पूछे कि भाई हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक हार्ट की एक गंभीर बीमारी है, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और जब ये होता है तो पेशेंट को बहुत तीव्र यानी कि बहुत सिवियर पेन चेस्ट के मिडल में होता है, जो कि गर्दन तक जा सकता है, दोनों बाहों में जा सकता है, साथ में एकदम पसीना आने लगता है, गर्मी लगने लगती है, घबराहट होती है और सांस भी हल्का होने लगता है। तो ऐसे में इसको हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि हार्ट का ये हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो जब हार्ट अटैक होता है तो ऐसे में हमें ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना होता है, और इसको कहा जाता है कि अगर 1 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाए तो सबसे बढ़िया है, और नहीं तो जैसे जैसे समय जाएगा उससे जीवन का खतरा हो जाता है, यानी जान का खतरा होता है। और हार्ट अटैक में माना जाता है कि अगर हमने 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में ट्रीटमेंट नहीं किया तो कम से कम 15 से 20% लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए समय को नहीं गंवाना है। हार्ट अटैक में यही हम लोग देख भी रहे हैं आजकल, बार बार मीडिया में भी देखते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि जहाँ पे मतलब समय से इलाज नहीं हुआ तो हम बचा नहीं पाते मरीज को। तो समय बहुत ही इसके अंदर एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, और उसको हमें खोना नहीं है ड्यूरिंग हार्ट अटैक प्रोसेस। और 1 घंटे के अंदर हमें दवा मिल जानी चाहिए, एक ट्रीटमेंट का पूरा, जैसे कहते हैं हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। वहाँ पे आजकल सबसे बढ़िया इलाज जो माना जा रहा है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी एंजियोप्लास्टी अगर हो जाए 1 घंटे के अंदर या 90 मिनट्स के अंदर, तो जीवन का सबसे रक्षक ट्रीटमेंट यही माना गया। तो ये सबसे लोगों को जानना चाहिए कि भाई अगर ऐसा है तो तुरंत एंजियोप्लास्टी अगर डॉक्टर देख करके कह रहा है तो तुरंत कराएं, उसमें संकोच ना करें, उसमें सोचें नहीं ज़्यादा, क्योंकि समय उसमें ज़्यादा होता नहीं। तो इसलिए एंजियोप्लास्टी, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें नस जिससे ब्लॉक है, क्योंकि हार्ट अटैक के दौरान नस पूरी ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर क्लॉट यानी खून के थक्के चिपक जाते हैं, तो उनको
दवाइयों से गलाते हैं और साथ में स्टेंट लगा करके पूरा नस का फ्लो खोल देते हैं, जिससे कि बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसलिए हार्ट अटैक के दौरान की एंजियोप्लास्टी को हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं, और उसके लिए कोई, जिसे कहते हैं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट स्टेप वही होना चाहिए। और अगर जिन लोगों का ब्लॉकेज जब एंजियोग्राफी में निकलता है कि तीनों नसों में है या बहुत ज़्यादा है, तब हम उनको बाईपास सर्जरी की सलाह। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राजीव बसी, आपके पास आते हैं। अगर आपने भी देखा होगा और हम देखते हैं, हम सब लोग अक्सर देखते हैं कि बिकॉज ऑफ सम रीजन अदर लोग जो है अक्सर एंजियोप्लास्टी कराने से डरते हैं, नहीं कराना चाहते। जैसे डॉक्टर चंद्रा ने बताया, जो बहुत कीमती समय, पीपल लूज दैट टाइम एंड दे लैंड अप लेट। सो व्हाट कैन हैपन इफ दे सर्वाइव एन एमआई? सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? आगे जाके क्या होता है लोगों के साथ? हाँ जी, वेलकम डॉक्टर चंद्रा, नाइस टू सी यू हेयर। और बिल्कुल राजेश जी, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है। हमारे कंट्री में ना इसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है। अब धीरे धीरे करके ये बेटर हो रही है, लोग समझने लगे हैं, बट फिर भी कई बार पेशेंट आता है, आप उसको समझाते हैं कि देखिए आपके ईसीजी में चेंजेस हैं जो दिखाते हैं आपको हार्ट अटैक है, आपको इमीडिएटली हमें इस नस को खोलना है, हम आपको कैथ लैब लेके जाएंगे। उसके बाद उनका जनरली रिएक्शन होता है, अच्छा मैं अपने डॉक्टर से पूछता हूँ, मैं अपने उस रिश्तेदार से पूछता हूँ, मैं अपने उससे पूछता हूँ। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि एक अवेयरनेस की कमी है, पहली। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन आई फील ये है कि एक फीलिंग है सब में कि हॉस्पिटल गए नहीं और डॉक्टर ने हमारे को स्टेंट लगा दिया। ये फीलिंग जो है वो, उसका कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली ये फीलिंग तो सिर्फ जैसे आप लोगों का ये प्रोग्राम है, या आप लोगों के ऐसे प्रोग्राम्स, या जिससे कि हम ये एक कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचा सकें कि ये इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करना है। और जैसा कि डॉक्टर प्रवीण ने बताया, अगर पेशेंट टाइम से पहुंच जाता है तो हम वर्चुअली, आप देखते हैं जिनका घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में हो जाता है, उनके हार्ट में कोई डैमेज नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, उनके हार्ट की वीकनेस बढ़ जाती है, उनको सांस फूलने लग जाती है, उनको धड़कन बिगड़ने की रिस्क हो जाती है, 15 से 20% चांस सडन डेथ का होता है। और अल्टीमेटली जिन जिन लोगों को ये ट्रीटमेंट डिनाई हो जाती है, उनमें और जो क्रॉनिक हार्ट डिजीज के सिम्टम्स वो सब आने लग जाते हैं। एक 30-35 साल का आदमी जिसका हार्ट 30% पे रह जाए हार्ट अटैक की वजह से, वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकता। वो अपने जो डे टू डे काम है, जैसे कि कुछ सीढ़ी चढ़ना, कुछ सामान को उठा के इधर, वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको थोड़ी सी एक्सर्शन पे सांस फूलती है। जैसे कि आपने एक खेत के का पानी रोक दिया तो जमीन बंजर हो जाती है। एग्जैक्टली वही चीज आपने उसकी नाड़ी को रोक के, नाड़ी रुक गई और वो जो हार्ट है वो बंजर हो गया है, उसकी पंपिंग फेल होने लगी है। फिर हार्ट फेलियर और सडन डेथ, ये सारी चीजों के फीचर्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को रेकरेंट चेस्ट पेन हो सकते हैं, अगर वो पार्शली खुली हुई आर्टरी लेके घूम रहा है, वो थोड़ा सा भी एक्सर्ट करेंगे उनको फिर पेन होगा। थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएंगे, उनको फिर पेन होगा। और ऐसे इंडिविजुअल्स हमेशा एक रिस्क में रहते हैं कि कभी भी इनके साथ कुछ हो सकता है। तो जो मेरी इस प्रोग्राम के थ्रू, या जैसे जो भी मैं प्रोग्राम्स में या उसमें पार्टिसिपेट जनरल पब्लिक के लिए करता हूं, मैं यही चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारे आजकल ऑल्टरनेटिव मेथड्स सामने नजर आ रहे हैं कि आपने ये नहीं कराया, हम कुछ ये ऑल्टरनेट दवाई दे देंगे, हमारा ये सिस्टम है, इससे इसका इलाज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हार्ट अटैक में या हार्ट की मेजर ब्लॉकेजेस के लिए दो ही ट्रीटमेंट्स हैं, एक एंजियोप्लास्टी, एक बाईपास सर्जरी। उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो ब्लॉकेजेस फिर से ना बने।
और फिर से ना बने और बाकी फ्लोस बने रहें और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। ओवर द इयर्स हमने ये देखा है, जिनकी हमने 10 साल 15 साल पहले एंजियोप्लास्टी करी और उन्होंने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जिन्होंने दवाइयां छोड़ दी, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, शराब पीते रहे और बाकी लाइफस्टाइल उनका खराब रहा, वो बार बार आते हैं या अल्टीमेटली नहीं रहते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया एंड आई एम श्योर कि the message would have gone to the audience, the importance of treatment. And just as Dr. Praveen Chandra has said, treatment in time is just as important. Dr. Sushant Srivastav has joined us. Welcome, sir. Because this is a very, very extremely important topic, I would just request few words from you. कुछ आप भी हमारे श्रोताओं को बताएं MI उसके ट्रीटमेंट के बारे में, if you would like to add. देखिए, एमआई और उसका ट्रीटमेंट द परव्यू ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट, ये कार्डियोलॉजी में आता है। आजकल एमआई का जो ट्रीटमेंट, जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, he goes to a well equipped hospital, he is diagnosed to be having an MI, he is immediately taken to a cath lab and an angiogram is done. एंजियोग्राम में अगर कोई ब्लॉकेज दिखती है तो जो कल्प्रेट आर्टरी होती है कम से कम उसको वो ओपन कर देते हैं, इससे हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। तो एमआई का ट्रीटमेंट मोस्टली कार्डियोलॉजिस्ट्स करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एमआई हो तो उसमें कार्डियक सर्जरी करनी होती है। एमआई के सेटिंग में कब कार्डियक सर्जरी करनी पड़ सकती है? मोस्टली व्हेन देयर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई, और कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, एमआई की वजह से हार्ट के सेप्टम में होल हो सकता है, जिसको हम पोस्ट एमआई वीएसटी कहते हैं। हार्ट एमआई की वजह से एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन, एक वाल्व है जो बुरी तरह लीक करने लगता है, वो एक कॉम्प्लिकेशन है। और रेयर इंस्टेंसेस में हार्ट फट जाता है, हम उसको कार्डियक रप्चर, don't reach hospital in time, but there is on record experienced surgeons have done some cases at least in patient with rupture, operated and was fortunate enough to survive. तो ये चीज़ें जो हैं, जो एमआई के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कार्डियक सर्जरी के द्वारा ट्रीट की जाती हैं और इसमें एमआई का रोल है, इसमें कार्डियक सर्जरी का रोल है। प्लीज। जो कॉम्प्लेक्स डिजीज है, जहां या तो पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और रेकरेंस ऑफ ब्लॉकेजेस हैं, या मल्टी वेसल डिजीज है जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्टेंट्स डालने होंगे और शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा स्टेंट्स डालने का, तो उसके अंदर हम लोग सकते हैं। ट्रिपल डिजीज हो, कॉम्प्लिकेटेड ट्रिपल वेसल डिजीज हो, लेफ्ट मेन विथ ट्रिपल वेसल डिजीज हो, ये डिपेंड करता है कि आर्टरीज में कोई भी अगर हम एक सबसेट देखें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का, जैसे लेफ्ट स्टेनोसिस है, तो ऐसा नहीं कि में स्टेनोसिस सर्जरी के लायक होते हैं। कईयों में कार्डियोलॉजिस्ट स्टेंट डाल के उसको ट्रीट कर लेते हैं और पेशेंट बिना सर्जरी के निकल आता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसका जो नेचर है डिजीज का, जो ब्लॉकेजेस हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसमें स्टेंट डालना बेनिफिशियल नहीं लगता है, एंड देन बाईपास सर्जरी बिकम्स द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस। और उन लोगों में जब हम करते हैं तो उनमें फ़ायदा होता है, मोस्टली ये फ़ायदा लंबे टाइम तक सस्टेन्ड रहता है। और बाईपास सर्जरी करने फ़ायदे हैं उन मरीज़ों में जिनमें कि वो इंडिकेटेड हो, जिनमें नहीं इंडिकेटेड है उन्हें बिना without enough reason patient should not be subjected to bypass surgery. Thank you, sir. Thank you so much. Now I'd like to come to you, Dr. Praveen Chandra, because मैं खुद डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, तो अच्छे से समझता हूँ हमारे डायबिटीज पेशेंट्स की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को।
डायबिटीज और प्री डायबिटीज ये दो ऐसी बीमारियां हैं which have themselves become a pandemic in our country. In some places, we have over 30% of the population with pre-diabetes. We have more than 14% of population with diagnosed diabetes. So this forms a very, very large chunk of patients with both diabetes और pre-diabetes जिनको diabetes होने वाली है. एक बात ऐसी है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ क्योंकि उनका इलाज अब पहले से बेहतर हो गया है, they are surviving for a longer period of time, but almost 60% of the diabetic patients die because of cardiovascular disease, MI, heart attack, heart failure. So, सर आप हमें बताइए डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिलेशन क्या है? ओके, प्रवीण सर. या सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का क्या संबंध है. तो सबसे पहली चीज़ हम ये बताएं आपको कि जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है, कम से कम 50% लोगों को किसी न किसी फॉर्म में हार्ट डिजीज़ या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है. और हम लोग जो पेशेंट्स देखते हैं जिनको हार्ट डिजीज़ रहती है, अगर उनमें देखें तो करीब 40% लोगों को रहती है. और जैसा कि अभी आपने ऑलरेडी बताया ही कि इंडिया के अंदर हमारे देश में डायबिटीज़ की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब ये है कि हमारे देश में हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स भी बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ आपस में काफ़ी घने मित्र कहे जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ डायबिटीज़ होती है वहाँ उसको बुला लेता है हार्ट डिजीज़ को, और जहाँ हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हम देखते हैं तो उसमें ये मिलता है. सो नाउ द थिंग इज कि प्रश्न आता है कि पहले तो डायबिटीज़ अगर है तो हार्ट डिजीज़ से कैसे बचें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है बचाव. तो अगर किसी को डायबिटीज़ या शुगर है तो उसको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लगातार जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी ताकि उसको हार्ट डिजीज़ से बचाया जा सके. दूसरी चीज़ कि उसका शुगर का अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, उसके ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, उस पेशेंट को रेगुलर वॉक करनी चाहिए ताकि उसको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना कम हो जाए. लेकिन अगर शुगर के पेशेंट्स को हार्ट डिजीज हो ही गई तो समय समय जांच होनी चाहिए, जैसे हर साल या 2 साल में एक जांच करके देखना चाहिए कि कहीं डिजीज आ तो नहीं रही है, बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि डायबिटीज के में हार्ट साइलेंट हो जाती है, साइलेंट हार्ट अटैक भी होते हैं. इसलिए बचाव का बहुत बड़ा रोल है, और अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट फिर टेस्ट एंजियोग्राफी भी करके देखी जा सकती है. अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, हार्ट वीक होने लगता है किसी किसी का, शुगर के पेशेंट्स का, तो उसमें करते हैं कि क्यों वीक हुआ, और फिर दवाइयाँ देने से. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पे इलाज हो, सही समय पे उसकी एंजियोग्राफी हो, सही समय पे एंजियोप्लास्टी हो, तो उसको नॉर्मल लाइफ दी जा सकती है. थैंक यू सर. डायबिटीज आपने आपने बहुत अच्छा बताया, समझाया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. डॉक्टर पसी, आई लाइक टू कम ओवर टू यू. आजकल डायबिटीज के इलाज में कुछ ऐसी नई दवाएं आ रही हैं, सम न्यू मेडिसिन्स हैव कम अप फॉर्चुनेटली सिंस पास्ट फ्यू इयर्स. अभी अभी कुछ ऐसी चीजें आई हैं, so which may actually be beneficial both in treatment of diabetes and then disease related to hearts. So would you like to give a message across to our viewers कि maybe जब वो अपने डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ बताएं so that they are more receptive, because this is also a challenge now. Yes, this is true. This is true. Now, ये बहुत सारी अच्छी दवाइयां आई हैं. पहले डायबिटीज का इलाज आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले यही होता था कि हम शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें. अब डायबिटीज का इलाज शुगर लेवल से कई गुना आगे बढ़ चुका है. हमें डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करना है. ये हमें देखना है कि पेशेंट को डायबिटीज की वजह से हार्ट, किडनी, आईज और नर्व्स, इन सब चीजों पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए. अब ऐसी कई सारी दवाइयां अवेलेबल हैं, और
अब पहले महंगी थी क्योंकि वो अंडर पेटेंट थी, अब वो बाय एंड लार्ज मोस्टली ऑफ पेटेंट हुए जा रही हैं और आम जनता को अवेलेबल हो रही हैं। इन दवाइयों को पेशेंट्स को लेना चाहिए, उनको एक सुपरविजन में, मतलब एक डायबिटोलॉजिस्ट के या कार्डियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ये मेडिसिन प्लस ब्लड थिनर्स प्लस जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला स्टैटिन्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती हैं, पर इसके साथ साथ दूसरे हार्ट अटैक की, फ्यूचर हार्ट अटैक्स की या फ्यूचर ब्लॉकेजेस की रिस्क को भी कम करती हैं। सो ये सारी दवाइयां डायबिटिक पेशेंट्स में और हार्ट के पेशेंट्स में चलनी चाहिए। एक्चुअली जब एक मिडिल एज पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है तो हमको अज्यूम कर लेना चाहिए कि साथ साथ उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है। एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट which is now well recognized that diabetes is a CAD equivalent. That is that the patient can be assumed to be having some sort of atherosclerotic vascular disease, whether it is in the heart, in the brain, in the peripheral arteries, somewhere the disease has already set in. तो इसलिए ये जो नई दवाइयां हैं, नए ग्रुप्स हैं, ये सब जरूर चलने चाहिए और जनरल पब्लिक को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। आप अनम्यूट करिए। Hello, sir. So now I think we have had a lot of discussion about the acute diseases, MI and coronary artery disease. Maybe we would move over to some other diseases which are also common and which people do have. So, Dr. Sushant sir, would you like to answer about the relationship between excess weight, NAFLD, and heart diseases? Because I think this is very important. We have a lot of obesity in our country, and that also plays some role in development of heart disease. Dr. Kesri, can I disturb? Sir, please. Yeah, so I have to leave in between. So in case there is anything which is left for me, I'll be happy to answer. Otherwise, if you would excuse me now. So yes, if other panelists would allow me, then I would like to ask you about the prevention of heart diseases, about the importance of diet and exercise. Yeah, as you know, as Dr. Pasi has already alluded to that diet and exercise is a very, very important component of lifestyle modification for prevention of heart disease, because we already know, हमें मालूम है कि भाई lifestyle is a serious factor which leads to heart problems if it is not under control, and that is why heart disease is also known as lifestyle diseases. So in lifestyle, diet and exercise is the most important component, apart from the smoking and stress and many other things. So as far as the diet is concerned, the advice generally is to have a balanced diet. Those people who do not have a heart problem, they should take a balanced diet. They can take oil, they can take butter, but in limited quantities, and also take more of vegetables, more of fruits, and less of processed foods. Processed foods क्या होते हैं? Processed foods वो होते हैं जिनके अंदर की एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा ऑयल बना करके मिला करके उसको प्रिजर्व करके रखते हैं हम लोग। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैगी क्या है? मैगी एक प्रोसेस्ड फूड है, उसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, इसलिए वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। या जैसे कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो शुगर बेस्ड होती हैं, यानी इनको शुगर से मिला करके उनका सिरप बनाते हैं और उससे बनाई जाती है। या जो फ्रूट जूसेस जो टेट्रा पैक्स में आते हैं उसमें भी एडेड शुगर होती है। सो ऑल दीज थिंग्स in general are processed foods, like pizzas, like burgers, like fries. These days they are all processed foods, so they should be taken in very limited quantities, should not be taken regularly, and in ample amount of vegetables and fruits is recommended for all people. ज़्यादातर लोगों को ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात एक्सरसाइज है,
तो उसके लिए आमतौर पे हम लोगों की एडवाइस यही है कि कम से कम 4 से 5 दिन इंसान को वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 30 to 40 मिनट्स एवरी डे। अगर ये करते हैं तो हार्ट डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और हार्ट डिजीज भी ठीक रहेगी। थैंक यू सर। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्लीप का कोई रोल है इसमें? स्लीप का Because sleep is something which is very upcoming, and the role of sleep is being emphasized in many chronic diseases, in metabolic syndrome, in diabetes. या देखिए, स्लीप एज नेचुरली अगर आप सोचें तो स्लीप बॉडी का कोपिंग मैकेनिज्म है जिससे कि शरीर अपने आप को रिकवर करता है, अपने बॉडी के सेल्स रिकवर करते हैं, उनको रेस्ट मिलता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा शरीर ठीक से रिकवर नहीं करेगा और शरीर भी हमारा हार्ट भी अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो सही से काम नहीं करेगा और उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो स्लीप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आमतौर पे माना गया है कि करीब 6 घंटे की स्लीप अगर है तो अच्छी बात है। अगर कोई 8 घंटे भी करता है तो कोई बुरी बात नहीं, बट 6 आवर्स इज अ गुड स्लीप टाइम। और क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। जैसे कि लोग बाग आजकल बीच बीच में फ़ोन उठा उठा के देखते हैं, फ़ोन से डिस्टर्ब होते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं। और कुछ पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि उनको खर्राटे आते हैं, यानी स्लीप प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उसके लिए एक स्लीप स्टडी टेस्ट भी होता है, वो काफ़ी इजी होता है, उसको कराया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। सवाल तो बहुत सारे हैं, एंड आई थिंक जो समय हमारे पास है, दैट टाइम इज too little to answer even all those the basic questions that we would have liked to hear from you all. So moving over to Dr. Sushant sir, if you would like to answer the question about fat and heart disease. Is there a relation between excess fat in the body, like diseases like NASH or NAFLD, obesity? Sir, you are muted, sir. Obesity does have a relationship with heart disease and with poor health in general. Heart disease के अलावा जो obesity के कई और ऐसे consequences हैं which are deleterious to health. So my video. Can you see me? Yes, yes, we can see you and we can hear you also now. The problem is I can't see myself on the screen. Okay. Anyway. We can hear you, sir. ओबेसिटी के बड़े सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं और एक्सेस वेट इज ऑलवेज ए डिसएडवांटेज. नाउ व्हाट लीड्स टू ओबेसिटी कैन इट बी? Those are the two relevant questions. Obesity in general is caused by an excess consumption of calories and too little exercise. When the balance between consumption of calories and exercise is disturbed in the form of excess consumption of calories and too little exercise, obesity is slowly body weight increases and a time comes when the patient becomes obese. So the tools to counter it are obvious. One, consume fewer calories and undertake more exercise. Now, if there's one message I want to give with regard to obesity and health in general, it is eat less. If at each meal we take a precaution or make it a habit to come away from the table a little hungry, that will go a very way in not only preserving body weight, in making us healthier. Of course, Dr. Chandra has already spoken about exercise. The simplest form of exercise is walking. And if someone undertakes brisk walking for 30 minutes, 5 a week, then that exercise goes a long way in maintaining body weight and also preserving cardiovascular and general health. The relationship between fat and coronary artery disease is complex.
Fats are essential for health, and we do need all kinds of fats, monounsaturated fats, polyunsaturated fats, and a little of saturated fats as well. There was a time when heart patients read that saturated fat not be consumed. But there isn't a one-to-one relationship between consumption of saturated fat and the development of heart disease. ऐसा नहीं है कि हम saturated fat खाएंगे तो वो सारा हमारी आर्टरीज में जमा हो जाएगा. हमें थोड़ा saturated fat खाना चाहिए. But again, our total consumption of fat and the total consumption of calories, which is even more important, because when we consume excess calories, the only way the body can store it is as fat. So when we consume excess calories, that excess is converted into fat and stored in the liver. Now, liver and the adipose tissue, it's converted in the liver and stored in the adipose tissue. So it leads to several other consequences such as non-alcoholic fatty liver disease. So it is always in the interest of health to develop a habit of eating less. The focus should be on consuming less fat, less saturated fat, and at the same time on consuming fewer calories. So we need to create a gradual calorie deficit in the body so that stored fat is mobilized and lost, and the ideal weight is regained. The two ways of doing it have already been mentioned. One is prudent diet, and the other is regular exercise. Thank you, sir. I think because this is a very, very important topic and a message again to our viewers, I would request Dr. Rajiv Passi also to join in. And आप कुछ बोलना चाहेंगे in addition to that, and especially because अभी saturated fats की बात हो रही है, तो I think देसी घी हम अगर समझाएं लोगों को तो वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे. तो देसी घी खा सकते हैं, नहीं खा सकते, नट्स कितने खा सकते हैं, तो कुछ थोड़ा इस पे भी elaborate करिए सर. हाँ, देखिए ऐसा है, एक मिक्सचर ऑफ ऑयल्स जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है. जैसे मस्टर्ड ऑयल है, वो एक प्रेफर्ड ऑयल होना चाहिए. दूसरा एक ऑयल आता है कनोला ऑयल, वो भी हार्ट हेल्थ के लिए एक अच्छा ऑयल माना जाता है. तीसरा ऑयल है ऑलिव ऑयल. ये 3 ऑयल्स हैं जो कि बाय एंड लार्ज अच्छे ऑयल्स माने जाते हैं और वाइड स्प्रेड यूज के लिए हमें एडवोकेट करने चाहिए. इनका अगर हम कोई डिश किसी में बनाए, कोई डिश किसी में बनाए और लिमिटेड अमाउंट रखें, ये बहुत अच्छा है. देसी घी कई सालों तक उसके ऊपर डिबेट होती रही है, अब आज भी डिबेट है. देसी घी के भी कुछ बेनिफिट्स हैं. स्मॉल क्वांटिटीज में देसी घी भी लिया जा सकता है, बट देसी घी लेने से वेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. तो इसलिए देसी घी हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, बट देसी घी एक अच्छा सोर्स है जिससे कि स्वाद भी बना रहता है और लोगों के लिए उससे हेल्थ भी बनाई जा सकती है. इसलिए कभी कभी देसी घी की कंजम्पशन करी जा सकती है. रिफाइंड ऑयल्स, डालडा, वनस्पति, ये सब या रीहीटिंग ऑफ ऑयल्स हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके. तो इसलिए जो आज की टीचिंग है, जो आज की साइंस जहां तक पहुंची है, उसमें यह है कि शुगर और जैसा कि डॉक्टर चंद्रा ने भी कहा, प्रोसेस्ड फूड और इनकी कंजम्पशन मिनिमम होनी चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सब, इन सब की कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए. और हमारा जो डाइट कंपोनेंट है वो फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइडेड होना चाहिए. प्रोटीन्स मेजर चंक, फैट्स और फिर कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो हमारे रिफाइंड शुगर्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए जहां तक हो सके. जैसे कि केक में आता है या बिस्किट में आता है या मिठाइयों में आता है, उसको अवॉइड करना चाहिए जहां तक पॉसिबल है. तो ये ऐसे में जो डाइट का कंट्रोल है वो एक जैसा मतलब उस कैलोरीज को लिमिट करना चाहिए, न्यूट्रिशन करना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना चाहिए.
और बुरी आदतों से बचना चाहिए। सिगरेट पीना, शराब पीना, स्ट्रेस रखना, इन चीजों से बचना चाहिए। मेरा यही मैसेज है जो कि आगे जाना चाहिए। थैंक यू सर। सर आपसे क्योंकि मेडिकल है, क्योंकि मेडिकल साइड से आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव ब्रीफ कमेंट ऑन वायरल डिजीजेस लाइक वायरल कार्डियोमायोपैथीज जो हो सकती हैं, और ब्रीफ हाँ, ये एरिथमियाज पे भी बोल देखा दीजिए, गया है पेसमेकर के कि बारे में। सडनली यंग लोगों को जिनको कुछ देर फीवर हुआ, कई केसेस में कोविड के बाद, कईयों में इवन अदर नॉन कोविड वायरल डिजीजेस में, उसमें उनको कुछ दिनों के बाद सांस फूलने आती है, उनको कभी चक्कर आता है, किसी किसी की इवन सडन डेथ हो जाती है। और इवेलुएट करते हैं तो ये पता चलता है कि हार्ट पंपिंग कमजोर पड़ गई है। उसमें कुछ हद तक कुछ वायरल फीवर का इफेक्ट हार्ट पे देखा गया है। और ऐसे पेशेंट्स में मेजॉरिटी में जो इफेक्ट आता है वो है कि हार्ट की पंपिंग जो है वो कमजोर हो जाती है। उनमें हार्ट की ब्लॉकेज नहीं, ब्लॉकेज के इवेंट्स एज सच नहीं होते, पर मसल की वीकनेस आ जाती है। आजकल हार्ट मसल वीकनेस को भी ट्रीट करने के बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इनको इस प्रोसेस से अगर ये जल्द किसी अच्छे डॉक्टर, एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट करके इससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। थैंक यू सर। हमारे पास समय कम आई है। थिंक नाउ अभी ओपीडी का टाइम हो रहा है मेरा, ठीक है? Okay, sir. Thank you so I much for hope the being with session us. has been informative. It was very Thank you. informative. Thank you so much. Dr. Sushant sir, Yeah. Sushant Thank you very Srivastava much, sir, sir. I'd like to come over to you. Now that we are coming over to the failure of the heart, when the heart is not able to pump sufficiently, there are a lot of options for patients who are going into terminal heart disease. So please हमें उसके बारे में कुछ बताइए, the ventricle assist devices and transplant surgery. To give us our viewers some idea about this. तो हार्ट फेलियर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है एंड द हार्ट डज नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट्स। मरीज की कई बार सांस फूलने लगती है, हाथ फूल जाते हैं, कैविटीज में जैसे फेफड़े है, पेट में पानी जमा जाता है, चेहरे की सूजन होती है, और हार्ट फेलियर का असर दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ना शुरू होता है। तो किडनी डिसफंक्शन शुरू होता है, कुछ इनमें राइट फेलियर है, उनमें लिवर डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, और इससे बहुत खा जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाता और उसको बार बार आईसीयू में एडमिट करता है। हार्ट फेलियर के कई सारे कारण हैं, पर जो कॉमन कॉजेज हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से हार्ट लॉन्ग टर्म में फेल कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के अपने आप में कोई लक्षण नहीं होते, तो हाई ब्लड प्रेशर चेकअप के थ्रू ही पता चलता है। तो जो मिडिल एजेड लोग हैं या एल्डरली लोग हैं उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, चूंकि ब्लड प्रेशर सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कई बार नज़रअंदाज किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। मरीज कहता है मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, दवाइयाँ खाना बंद कर दे। ठीक नहीं है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको अपनी दवाइयाँ नियमित तौर पे खानी चाहिए और उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये देखना चाहिए कि उनका हाई ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल्ड है कि नहीं। अब हार्ट फेल होता है, 3 या 4 स्टेजेस में होता है। जो अर्ली हार्ट फेलियर है उसका ट्रीटमेंट मेडिकल होता है, उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, उससे मरीज बेहतर फील करता है। कई नई दवाइयाँ आ गई हैं जैसे सैक्यूबिट्रल वैल्सार्टेनेशन है, वो उससे हार्ट फेलियर में काफ़ी फायदा होता है। डिजॉक्सिन, सॉरी आई बेग योर पार्डन, जो डायरेटिक्स हैं, जो पेशाब, जो वाटर पिल्स हैं वो दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, और इन चीज़ों से हार्ट फेलियर में काफ़ी फायदा होता है।
इसके अगले स्टेज पर हार्ट फेलियर को हम एक डिवाइस से ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी में एक ईसीजी में एक खास चेंज देखा जाता है हार्ट फेलियर में, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड हो जाता है, इसका मतलब है कि हार्ट के जो दोनों चैम्बर्स हैं वो सिंपनी में नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से हार्ट की पंपिंग इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। तो इसको हम एक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी से बेनिफिट इसमें पहुंचाया जा सकता है, इनको फायदा दिया जा सकता है। ये एक मेडिकल डिवाइस होता है, ये एक डिवाइस होता है जो बिना ऑपरेशन के, एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा कार्डियोलॉजिस्ट डालते हैं, और इससे हार्ट की पंपिंग, हार्ट को रीसिंक्रोनाइज किया जाता है, हार्ट की पंपिंग इसमें इम्प्रूव होती है। साथ हार्ट फेलियर में कई बार लोगों की दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, एंड समटाइम्स कैन बी लाइफ TD device also has an inbuilt defibrillator। तो अगर irregular beat होती है तो वो इंटरनल के उसको करता है। और हार्ट फेलियर का एक स्टेज ऐसा आता है कि मरीज दवा या CRT फिट करने के लायक नहीं रह जाता, और उसको बार बार सिम्टम्स होते हैं। जितनी दवाइयां दी जा सकती हैं दी जा रही हैं, पर मरीज को बार बार लक्षण आते हैं, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। ये एंड स्टेज हार्ट डिजीज है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूजुअली 1 साल से कम होती है, और जो एंड स्टेज हार्ट डिजीज है उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक लेफ्ट असिस्ट डिवाइस, ये एक मशीन होती है जिसको हार्ट के पास इम्प्लांट किया जाता है और हार्ट से कनेक्ट किया जाता है। ये मशीन हार्ट को ऑफलोड करती है और हार्ट ब्लड सर्कुलेशन को हार्ट के साथ साथ इट अंडरटेक्स द जॉब ऑफ पंपिंग ब्लड। तो हार्ट जो थोड़ा बहुत ब्लड पंप करता है वो तो चलता रहता है, उसके अलावा ये मशीन उसकी पंपिंग कैपेसिटी को ऑगमेंट करती है, उसको बढ़ाती है। ये मशीन हार्ट के बदले काफी कुछ काम करती है। और अब ये इतना विकसित हो गया है कि हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के इम्प्लांटेशन के बाद कई मरीज जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल से कम थी, वो अब 10 साल से इस मशीन के सहारे न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि नियरली नॉर्मल लाइफ्स लीड कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के डिटेल्स में जाना पॉसिबल नहीं है, पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस एक काफी अच्छा ऑप्शन है उन मरीजों के लिए जिनको टर्मिनल हार्ट फेलियर है। और जो दूसरा सर्जिकल ऑप्शन है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। जब जब मरीज को एंड स्टेज हार्ट डिजीज होती है तो उसके लिए हम हार्ट ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। इसके लिए मरीज का एक वर्कअप हो और ये पाया जाता है कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट डिजर्व करता है और सूटेबल है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसको रिसिपिएंट लिस्ट में डाला जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट में एक ब्रेन का हार्ट से उसको हार्ट फेलियर के, टर्मिनल फेलियर के मरीज में डाला जाता है। हार्ट प्लांट के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। 1 ईयर सर्वाइवल लगभग 90% है और सर्वाइवल लगभग 70% है। तो अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, स्पेशली बिकॉज वी आर विद ए सब पेशेंट्स whose life otherwise less than। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीज लाइफ लॉन्ग दवाई पड़ती है, इसको इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ कहते हैं, और हार्ट ट्रांसप्लांट के डॉक्टर उनकी दवाइयाँ रेगुलेट करते हैं बीच बीच में, उनके अगर भी उनके टेस्ट किए जाते हैं और उन्हें इन्फेक्शन से बचना पड़ता है। तो टर्मिनल हार्ट फेलियर के दो अच्छे सर्जिकल ऑप्शंस हैं, वो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन एंड हार्ट ट्रांसप्लांट। ब्रीफली इतना ही कहना है। अगर questions then I will be। आई थिंक आपने बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही सुंदर तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स
टॉपिक को बताया समझाया. I mean, hats off to you, sir, because this actually is a very complex topic even for doctors to understand, and you elaborated it so simply in such a beautiful way. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Now I'd request Shri Anil Rajput ji to give a vote of thanks. Thank you, Dr. Kesri. Thank you in absentia to Dr. Praveen Chandra and Dr. Rajiv Pasi. And thank you to Dr. Sushant Srivastava for all the information and knowledge that he has shared with our participants. I'm sure our participants have taken several notes on key to good and healthy heart. Moderation, as one of the doctors said, is key. Whatever is being done, it should be done in moderation. Excess of everything is bad. And another very important point was made that if you are feeling weak, feeling exertion is being felt by you, you should see your doctor so that he can preemptively advise you whether there are any symptoms of serious ailment. Notwithstanding so many things having said, balanced diet, healthy lifestyle, exercise of 30-40 minutes every day, and controlling your blood pressure, having proper sleep or minimum sleep of 6 hours is critical. So I'm sure people have taken note of all that our doctors have suggested, and we are grateful to them. I'm grateful to the team ASSOCHAM for organizing this webinar. And last but not least, thank you to you, Dr. Kesri, for keeping the session very live and engaging. Many thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Jai Hind.